Now next point is mode of poisoning of pesticides, which is divided into four categories. Pesticides are classified. First is a physical poisonous. Pesticide penetrate through the epidermis of the skin and produce lethal effect. फिजिकली क्या इफेक्ट पहुंचाएगा? लिथल इफेक्ट, और स्किन के एपिडर्मिस पार्ट को डैमेज करेगा. नर्वस पॉइजनियस, डीडीटी और एमआईसी, मेलिनेशन डायजिनोन initiate extreme nervous excitation and cause release of excessive neuroactive substance. नर्व एक्टिविटी, नर्वस एक्टिविटी को इनहेबिट करेगा. प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजनियस, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजनियस, Idrin, Zirim, lead, arsenic, etc. causes precipitation of protein in the body, causes liver damage and death. Protoplasmic poisonous, that means liver damage and death और प्रोटीन को बॉडी से रिड्यूस करेगा. रेस्पिरेटरी पॉइजनियस, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ रेस्पिरेटरी. Pesticides like hydrogen cyanide, methyl bromide, ethylene dichloride inactive the respiratory enzyme like oxidase, peroxidase and reduct, causing suffocation and blocked to respiratory tracts. रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ब्लॉक्ड करता है. हाउ पेस्टिसाइड्स our life. Pesticides actually affected man, animals, plants, soil and well as the aquatic biota. Toxicity toward the aquatic flora and fauna is the important criteria for the pesticides to be considered as hazardous pollutant. Pesticides affect in the variety of way as follows. इफेक्ट ऑन मैन. इफेक्ट सबसे पहले हम किस में देखेंगे? मैन में. इफेक्ट ऑफ मैन. Higher concentration of DDT in body part and blood of human being causes tension, cancer, mutilation, stress reaction, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करना, पॉइजनियस होता है. लो लेवल ऑफ डीवीटी कॉज करता है कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर को. इस तरीके से ह्यूमन हेल्थ को या मैन को इफेक्ट पहुंचाएगा. ऑर्गेनोफॉस्फेट लाइक मोनोकार्पोरेटेड डाइजोन, डस्टबिन, फॉस्ड्रीन inhibit the production of the junction between adjoining nervous cell. Next, effect of animal. Effect of animal insecticides such as elder, dielders, chloridan, endosulfan, heptachlor or gamma hexane are reported to affect the wildlife by changing their metabolic activity. डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं वो वाइल्ड लाइफ में जितने भी लिविंग सिस्टम हैं उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डैमेज करता है. एनिमल विच हैव बिकम वीक एंड मोरेबल and result exposure to pesticide may easily be destroyed by predators. Chlorphenoxy and compounds such as 2,4-D affect embryo while trizone may cause mutagenic effect in animal. Effect on bird. Pesticides such as parathion, malathion, eldrin, DDT has been implicated as the main विलीन एंड द कॉज ऑफ द थिन एंड फ्रेगल एग सेल्स. एग सेल्स को डैमेज करना, इनहेबिट करना, इंजाइम एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करना, हार्मोनल इनबैलेंस करना और मेटाबोलाइक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करना. पेस्टिसाइड्स पॉल्यूशन रिड्यूस एग लेयरिंग इन बर्ड्स एंड फीवर योग्स आर हैज्ड. इफेक्ट ऑफ एक्वेटिक बायोटा. बर्ड्स पे इफेक्ट देख लिए. नेक्स्ट है एक्वेटिक बायोटा. जली जीव जंतु पर क्या इफेक्ट है पेस्टिसाइड्स का? एक्वेटिक एनिमल्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिव इवन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी. इवन 1 part of DDT per trillion seems to cause
date in brain spring. Actual danger arise from DDT which result in changing the behavior and metabolic activity in sea animal. It is reported that marine invertebrates can concentrated pesticides by a concentration factor 17,000 more. Experimental have so DDT causes depressed of photosynthesis and phytoplankton. Effect of pesticides on soil. The most dangerous characteristic of pesticide, particularly organochloride, is their long persistence in the soil, which causes numerous adverse effects on grain quality. Even the accepted doses of pesticides create a deleterious effect in the long runs in the soil. Some pesticides accidents. The adverse effect of pesticides on the environment have been understandable and alarming. A dangerous disease terms is a handy gudu was observed in rural area of Chikmagalur, Chikmagalur and Shimoga in Karnataka. It was caused by fal- Feltree pesticides application in paddy and coffee field. The person who took fish, frog and crab from the pollutant river were found to be suffered of disease such as pain in the hip and knee joint, abnormal growth of bone and abnormal change in femur heads. Central Facility for Safety Evaluation of Pesticides. Industrial Toxicology Research Center, Lucknow has established a central facility for safety evaluation of pesticides with the following objective: to journal toxicology data on different pesticide synthesis, manufacture or formulation by national laboratory and private sector industry within the country.